Hi friends, how are you? Hope all you are well and doing good job. Today in this video I am going to explain about lactic acid. You know, lactic acid is the main constituent of our sour milk. It is found in blood and muscle tissue, where it is formed by the composition of glycogen. So lactic acid molecule is dissymmetric and therefore exhibits optical isomerism. You can see here, this is R form of hydroxypropanic acid. This is S form of hydroxypropanic acid. So this is alpha hydroxy acid because hydroxy group present at alpha position. This carbon is alpha and this is also alpha. So alpha hydroxy acid. So come to the preparation method. It is prepared by brominating propanic acid. This is CH3CH2COOH propanic acid and hydrolyzing the resulting 2-bromopropanic acid. This is resulting 2-bromopropanic acid, and by heating with dilute sodium hydroxide solutions. And further, if you heat dilute sodium hydroxide, you will get the lactic acid. This CH3CHOH This is lactic acid. This is the one method of preparations with the help of propanic acid. Now I am going to discuss second methods by the hydrolysis of acetaldehyde. Then acetaldehyde cyanohydrine obtained by reacting acetaldehyde with HCl. So you can see here, this acetaldehyde, this is cyanohydrine, and on hydrolysis you will get the lactic acid, CH3CHOH. This is lactic acid. So now come to the third method of preparations from fermentation of sucrose. Lactic acid is obtained on a commercial scale by fermentation of sugar by the microorganism BAL. BAL is Bacillus acidi lactii. So you see, this is disaccharide, glucose and fructose, monosaccharide, and after reaction with this microorganism you will get the lactic acid. Now we will discuss about the properties. In the structure of lactic acid, you have seen lactic acid, there is a two center, means COOH group and OH group. On that center, this OH group is secondary alcohol. So some reaction occurs on this center and some reaction occurs on this center, means on carboxylic groups. So formation of salt, you can see this is lactic acid. If you react with sodium hydroxide, what will happen? Lactic acid react with alkalis and alcohol to form salt and ester respectively. This is the salt, sodium lactate,
and if react with the alcohol, then you will get methyl lactate. This is the ester. And you know, when you heat two molecules of lactic acid, then you will get the cyclic ester known as lactite after removing two water molecules. Now come to the reaction with the sulfuric acid. When heated with dilute sulfuric acid, this is sulfuric acid, to 130 degrees Celsius, you will get the acetaldehyde and formic acid. This is not formaldehyde, this is formic acid. So I have to change this one. This is formic acid, HC double bond OH, formic acid. Again, if lactic acid decompose in the presence of concentrated sulfuric acid, then it is give the acetaldehyde, CH3CH. Now action of PCl5 on lactic acid, you will get the lactyl chloride. This is the lactyl chlorides. Now come to the next part, means oxidations. So lactic acid undergoes oxidation in the presence of Fenton's reagent or silver oxide. Fenton's reagent H2O2 and Fe3 plus mixtures, we are clearly saying Fenton reagent, or silver oxide. It gives the pyruvic acid. CH3COCOOH is known as pyruvic acid. And further, lactic acid undergoes oxidation in the presence of KMNO4. Acetic acid will be obtained. This is acetic acid. Now friends, come to the reductions part. Acetic acid or lactic acid is reduced to propionic acid when heated with hydroiodic acid. Hydroiodic acid. So you can see here, hydrochloric acid, you will get the iodo, OH group is replaced by iodine, and further again react with HI, give the propionic acid. Now come to the final reactions, iodoform reactions. Organic compounds containing the group CH3CHOH. You see here CH3CHOH present in lactic acid. So CH3CHOH lactic acid also forms iodoform when heated with iodine and alkalis. So in first step, lactic acid undergoes I2 with I2 give the pyruvic acid. Then pyruvic acid again react with basic medium I2 triiodopyruvic acid. This is triiodopyruvic acid is formed. And further triiodopyruvic acid react with sodium hydroxide, iodoform will formed, and this is the oscillator. So this is all about the lactic acid. Hope this video will be helpful to you for the preparations of part 2 exams. If you like this video, then share it with your friend and subscribe my channels. एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो क्या है कि दो फॉर्म में रहते हैं, एक आर फॉर्म, उसका एस फॉर्म होता है। उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो प्रोपानिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो 2-ब्रोमो प्रोपानिक एसिड मिल जाएगा, और फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे तो लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, एसिटल्डिहाइड को HCN के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो साइनोहाइड्रिन मिलेगा, साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो लैक्टिक एसिड मिलेगा। थर्ड मेथड क्या है,
कि डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैसिलस एसिडाई लैक्टाई से रिएक्शन करता है तो लैक्टिक एसिड मिलता है। अब हमें मालूम है लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में COOH ग्रुप और सेकेंडरी अल्कोहल, तो बहुत सारे रिएक्शन COOH से होंगे, कुछ रिएक्शंस OH पर होंगे। तो लैक्टिक एसिड को NaO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा जिसको सोडियम लैक्टेट कहते हैं। उसको एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ईस्टर मिलेगा जिसको मिथाइल लैक्टेट कहते हैं। 2 मोलिकुल्स लैक्टिक एसिड को हीट कर देंगे तो साइक्लिक ईस्टर मिलेगा जिसको लैक्टाइट कहते हैं। लैक्टिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो आपको एसिटल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड मिलता है। कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिटल्डिहाइड मिलेगा और PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH ग्रुप एंड बोथ OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl से एंड लैक्टाइल क्लोराइड मिलेगा। कम टू द ऑक्सीडेशंस, लैक्टिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशंस किसके प्रेजेंस में? सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में या फेंटन रिएजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और Fe3+ के कॉम्बिनेशन को फेंटन्स रिएजेंट कहते हैं। तो पायरुविक एसिड मिलेगा। KMnO4 के साथ करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा। रिडक्शंस, लैक्टिक एसिड को HA के साथ रिएक्शंस करते हैं तो 2-आयोडोप्रोपानिक एसिड मिलता है। उसको फर्दर HI के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोपानिक एसिड मिलेगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शंस, लैक्टिक एसिड को आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पायरुविक एसिड मिलता है। पायरुविक एसिड को फिर बेस एनालिसिस I2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ट्राइआयोडोपायरुविक एसिड मिलता है। ट्राइआयोडोपायरुविक एसिड को बेस के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये आयोडोफॉर्म मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मे बी ये आपके लिए अच्छा हो कि आप इसको अपने अच्छे से याद कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।